call sign Holong in the classic wing formation, a mark of discipline and precision in rotary flight today, led by Wing Commander Rishi Kant. Now, in Rhino, the Apache attack helicopters in a razor shaft formation. At the controls, Group Captain Anand Kumar Yadav. What a grand entry by Sarang, slicing through the skies in the mighty arrowhead formation. Now watch closely as the team is changing to wineglass formation, raising a top. स्वदेशीकरण के माध्यम से That was the leader, and here's the reaction. An aerial diamond dedicated to the gateway of the East, Guwahati. And now don't look away even for a second. You are in for a breathtaking surprise. And there goes number 4 pulling up a stall time. Sarans and Dawkins Elite. And as promised, there was number 4 joining up with the formation. देवियों एवं सज्जन, अब आप सब इन विमानों को और नजदीक से देखने के अद्भुत हवाई प्रदर्शन को सफलतापूर्वक से आते हुए विमान एक दूसरे को मानो छूकर गुजरेंगे। बिना पलकों को झपकाए अपनी नजरें सामने बनाए रखे लेवल मैश के लिए। The team performs under the ever-watchful eyes of the team safety officer. Today's safety officer is Wing Commander Adarsh Thakur, assisted by the videographer. Everyone now की ओर से आगे बढ़ रहे हैं सारंग 2, सारंग 4 लेवल क्रॉस के लिए।
यह जानकर अत्यंत आश्चर्य होगा कि ऐसे मैन्यूवर्स को अंजाम देने के लिए हमारे जाबाज पायलट केवल एक रोटर के फासले पर उड़ान भरते हैं। SIA को धौलन प्रस्तुत करने के लिए तैयार विपरीत दिशाओं से आते हुए सारंग 3 एवं सारंग 4 एक दूसरे को तेज गति से पार कर आपके समक्ष स्टॉल टर्न करते हुए अपने सिग्नेचर मैन्यूवर का प्रदर्शन करेंगे। अनेक धर्म, अनेक रंग, अनेक भाषाएं और इस अनेकता में एकता ही हमारे भारत की पहचान है। And that trickles down to our team as well. Coming from diverse cultural backgrounds, speaking different languages, we all work together towards our common aim of winning hearts and saving. And there comes that Cupid number 5 from your left, piercing straight through the beautiful Sarang heart. Pull up to present a salute to the nation, painting the skies in trail of red as a tribute to the valor and sacrifice of our warriors in Operation Sindoor. As they're moving with their gleaming fuselages, a glimpse into the Indian Air Force's modernization and future readiness. Super Hercules is Group Captain Manish Vyas, and the AN-32 on the left is being flown by Group Captain K. Varun Prakash. Vertical pitch, and there it spots an adversary and quickly turns to neutralize it. Pilot Johnny Tiakuluba Porati Dondi Dekise Aruko Diranga Gortu Dore Susalois. And the skies resonate as power meets precision. As we see the aircraft moving away, and there the aircraft pulls off, showing off its angles and delta platform, grace in motion, power in flight. Out straight ahead, the aircraft will come for a very tight offensive turn, like turning tight on a racetrack in the sky. Watch as it turns effortlessly in a radius of just a few hundred meters. Bonwara, Judo Biman और एक सौरन की हुंडर मुहूर्तो.
The pilot will now position for the next maneuver, the slow speed march. Watch how the aircraft effortlessly glides past you at a staggering speed of just 200 kilometers per hour. Time itself slows as Tejas floats, calm yet commanding, like a beam of light in motion. And there she climbs out, showing off its thrust. with twin train silhouette of MiG-29 fighters in big formation. Leading the formation, Group Captain B. Prabhakaran. And now, approaching from your right of the grandstand, the Colossus of the Sky is an aircraft, call sign Kaziranga. At the controls of refueler is Wing Commander Umesh Kumar, lead pilot of Mirage 2000, squadron leader Sabin NK. Approaching the grandstand now, symbols of youthful spirit and discipline. Line on again. Watch as it forms a figure of 8 in the sky, demonstrating a perfect blend of grace and control, a tribute to the training and traditions it once embodied. Of precision and professionalism of the Indian Air Force. Because of the aerodynamics. And now the pilot is positioning towards your right, this time to carry out a series of rules. Stop. Go.
Sabin NK. कुमारान महादेव के सम्मान में आकाश में त्रिशूल को अंकित करने आ रहे हैं विंग कमांडर शोभित, विंग कमांडर अनुभव और विंग कमांडर हेमराज। And now Rafale is repositioning for the maximum rate turn. A master stroke of control. और ये थी हमारी टीम की शानदार एंट्री एक लूप के साथ। कृपया विमानों की ओर ध्यान से देखें। हम सरहदों के वास्ते लोहे की एक दीवार है, हम दुश्मनों के वास्ते होशियार हैं, तैयार हैं। हर फॉर्मेशन में लीडर की बाईं तरफ उड़ान भरते हैं नंबर 3 स्क्वाड्रन लीडर एडवर्ड प्रिंस। नंबर
ये विमान एक दूसरे के ठीक पीछे स्थित हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे वायु योद्धा हमेशा एक दूसरे के साथ डटकर खड़े रहते हैं हर परिस्थिति। And that was number 5 who just went crossing the formation. And once again, it's time to shift our gaze towards our And now, coming up next from above the Ashwakant temple in front, you... Three, two, one, here they roll! रोल के तुरंत बाद ये विमान आसमान की ओर चल पड़े हैं, मगर ध्यान से देखें क्योंकि जैसे ही ये नीचे आएंगे ये अपनी दिशा 90 डिग्री से मोड़कर कुछ ही क्षणों में विभिन्न दिशाओं में फैल जाएंगे, सटीकता और अनुशासन की मिसाल देते हुए। ये अगला करतब है सूर्य किरण बर्स्ट। और अब कृपया आसमान में बन रहा ये दिन समर्पित है गुवाहाटी के लोगों को। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम की ओर से आप सभी को 93वें भारतीय वायुसेना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए And that's our Cupid, squadron leader Rahul Singh crossing through the heart and spreading the love. और अब कृपया अपनी नजरें अपने ठीक सामने। Everybody, be safe and happy landing.